अंटारियो सरकार ने कोविड-19 वर्कर बेनिफिट योजना देने का ऐलान कर दिता, जिसका लोग लंबे समय तो इंतजार कर रहे सन। लंबे समय की उड़ीक ते रोस प्रदर्शनों तो बाद आखिर ओंटारियो सरकार ने 3 पेड सिक लीव की योजना का ऐलान कर ही दिता है। डॉक्टरी पेशेवरां, लेबर एडवोकेट्स और सियासी लीडरां दे वल्लों इसकी मंग की जा रही सी तां जो कोरोना का सामना कर रहे लोगों को इस मुश्किल कड़ी दे विच थोड़ी राहत मिल सके। First, to introduce unlimited job protected leave so that nobody had to choose between their health and their job. And today, I'm pleased to introduce the Ontario COVID-19 Worker Income Protection Benefit. With the federal government indicating their openness to double payments through their program, we are stepping up to fill these gaps. We are the first in the country to double payments for the federal sick days program. With this new additional provincial funding, workers could now receive a total of $1,000 a week for 4 weeks. Make no mistake, Ontario workers now have access to the most generous sick pay program coast to coast. A persistent gap in the federal program is that workers must miss half of their work week to qualify. To fix this, our government will also lead the way by introducing the COVID-19 Putting Workers First Act. ओंटारियो कोविड-19 वर्कर प्रोटेक्शन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत उन्हां लोकां नूं लाहा मिलेगा जो लोग कोरोना पीड़ित ने, जिन्हां च कोरोना के लक्षण ने, जिन्हां दी मानसिक सेहत ठीक नहीं, जिन्हां लोकां ने कोरोना की वैक्सीन लवाई है। शर्तां पूरीआं करन वाले लोकां नूं $200 प्रति दिन की सहायता दी जाएगी। Their backs when Premier Ford negotiated with Prime Minister Trudeau a $1.1 billion fund for paid sick days last summer. ओंटारियो कोविड-19 वर्कर आमदनी सुरक्षा लाभ 19 अप्रैल तो 25 सितंबर तक चलेगा। इस तो इलावा कैनेडा रिकवरी सिकनेस बेनिफिट प्रोग्राम तहत दी जाती सहायता नूं दुगना करन दे लई ओंटारियो सरकार फैडरल सरकार दे नाल मिल के काम करेगी। जेकर फैडरल सरकार इसलिए राजी नहीं हुंदी तां प्रति हफ्ते $500 की बजाय $1000 मिलणगे। I experienced a workplace exposure from a member of my team who, despite their best efforts, tested positive for COVID-19 earlier this week. And I assure you, it is not lost on me that, unlike many people, I'm able to isolate and continue working. For too many people right now, that's not the case. And during these unprecedented times, regardless of where you work or what you do, if you're forced to go into isolation or quarantine, your job should be safe. That's why Ontario was the first province to introduce legislation to have job protective leave for COVID. ओंटारियो दे विच ऐलान हो चुका है तो ब्रिटिश कोलंबिया दे विच भी पेड सिक लीव दी मंग वध गई है। Yesterday, we've gone back to the shelf and taken the programs that we were working on here in British Columbia, and we're trying to get those up to speed to fill the gaps at the federal level. कैनेडा च कोरोना कारण प्रभावित लोगों वालों पेड सिक लीव की मांग की गई सी, जिसनूं ट्रूडो सरकार ने भी समर्थन दिता सी ते सूबिਆਂ ਨੂੰ फैडरल सरकार की मदद के नाल लोगों ਨੂੰ राहत देने का ऐलान किया गया सी। यही वजह सी कि जदों लंबे इंतजार तो बाद पेड सिक लीव की योजना का ऐलान ना किया गया तो कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ लागू करने की मांग के वजों विरोध प्रदर्शन भी होए, पर हुण ओंटारियो इस योजना ਨੂੰ लागू करने वाला पहला सूबा बन गया। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।